Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा DS-160 फॉर्म फिल आउट करना जो कि US नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है. We'll go through all of the steps and I'll share all of the details that I know. I filled this form out at least twice. एक जब मैं अपने F1 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था which actually got approved, और second अपने family members के लिए. So I've got some experience filling it out. So please वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू दैट, आई वुड अप्रिशिएट इट. लेट्स गो. Alright, here we are. सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हो ओपन इट अप एंड आपने अपने सर्च बार में लिखना है DS-160. DS-160 सर्च करने के बाद जो भी आपको पहला लिंक दिखे जस्ट क्लिक ऑन दैट. It's going to be from this ceac.state.gov. लोड होने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा and the first thing that you need to fill out is this location जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो या जहाँ पे आपने इंटरव्यू देने जाना है. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. जो भी आपको आपके घर से नियरेस्ट है, ट्राई टू पिक दैट लोकेशन. आई कैन जस्ट से अजरबैजान बाकू. सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में आपने जो भी आपको यहाँ पे ये कैप्चा दिख रहा है, दैट्स व्हाट यू नीड टू फिल आउट. सो आई एम जस्ट गोना से 54KJAA एंड आई होप काम करे. द third one is start a new application. Let's do that. आपने क्लिक करना है आई एग्री पे. प्लीज ये जो भी चीजें लिखी हैं प्लीज गो थ्रू दैट. एंड ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है. बेसिकली ये जो फॉर्म है ये काफी लंबा सारा है. लाइक there's a lot of details. अगर आप अभी से ये स्टार्ट ले रहे हो तो मे बी आपके पास सारी डिटेल्स राइट नाउ नहीं है. मे बी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कहीं से लाने हैं, लोगों से बात करनी है टू गेट मोर डिटेल्स. तो अगर आप ये एप्लीकेशन बीच में छोड़ के जा रहे हो तो, और अगर इस वेबसाइट पे आपने दोबारा ये रिट्रीव करनी है, सो दिस इज द एप्लीकेशन आईडी दैट यू नीड. सो इट्स बेटर कि ये आप अपने पास कहीं पे सेव कर लो एंड विद इन द नेक्स्ट 30 days आप अपने एप्लीकेशंस को बार बार रिट्रीव करके उसको सेव कर सकते हो. Okay, save that somewhere. And the next thing is to pick a security question. Basically, like I said, कि जब आप इस एप्लीकेशन को फॉर एग्जांपल अगर मिड में छोड़ के जाते हो एंड यू वुड नीड दिस एप्लीकेशन आईडी, और फिर आपको ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये भी आपसे ये पूछेंगे कि आपने क्या आंसर दिया था यहाँ पे. तो दैट्स व्हाई आप यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करो कि बाद में आपको उसका आंसर याद रहे. I'm just gonna pick the first question and I'm just gonna type ER. That's it. Yeah, I'm just gonna click on continue. All right. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हो जो कि आपने फिल आउट करनी है. एंड दिस इज गोना बी योर DS-160 रियली. आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है. आपने अपने यूएस ट्रैवल के बारे में डिटेल्स देनी है. आपके साथ कौन कौन जा रहा है अपने यूएस ट्रिप पे. प्रीवियसली आप यूएस कहीं पे गए हो या नहीं. Oh, I shouldn't have clicked that. What's your address and phone number. पासपोर्ट की डिटेल्स देनी है. Who's your US contact. US contact बेसिकली ये होता है कि अगर आप यूएस ट्रैवल कर रहे हो और आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पे, यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है. फैमिली डिटेल्स अगर आपके साथ कोई जा रहा है लाइक फॉर एग्जांपल, या फिर आपकी फैमिली में कौन कौन है, दैट्स व्हाट वी आर गोना पुट देयर. आप योरसेल्फ लाइक अगर आप काम करते हो, एजुकेशन करते हो, या फिर कहीं पे ट्रेनिंग हो रही है, दैट्स व्हाट यू नीड टू पुट इट हियर. एंड देन सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड क्वेश्चंस होंगे एंड वी विल गो ओवर देम एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट सेक्शन इज पर्सनल. Now, what's your surname? Surname basically family name होता है. So I'm just gonna put in test here. But अगर आपके पास अपना passport है तो please open it up और उसमें आप देख सकते हो कि like what's your surname or family name. Given names आपका first name होता है. So I'm just gonna put test in here as well. Uh, and I'm just gonna set does not apply to the third one. Okay. Have you ever used any other names? अगर आपको लेट्स अगर आपके कोई और नेम्स हैं जो आप यूज करते हो, यू कैन पुट इट देयर, बट फॉर द मोस्ट पार्ट आई जस्ट सेलेक्ट नो. डू यू हैव अ टेली कोड दैट प्रेजेंट्स योर नेम. नॉन रोमन लिटरल्स होते हैं उनको बेसिकली टेली कोड असाइन किया जाता है, बट फॉर द मोस्ट पार्ट लाइक 99.99% people just put in no. So let's just do that. I'm just gonna put in no. What's your gender? Let's go with male. What's your marital status? आपकी शादी हुई भी है या नहीं, या फिर अगर आप divorced हो, widowed हो, you can just put anything there. I'm just going to put in single for now. What's your date of birth? I'm just going to put in a random date of birth here. No.
1987, although I'm not that old. Disclaimer. What's your city of birth basically? So put anything there, जिस city में आप पैदा हुए थे. कौन सा province था? So I'm just gonna set that, and then I think I selected Azerbaijan because of Baku. But yeah, fill all of these details out. अपने हिसाब से. You can also say it does not apply, and that can go away. But for the most part, ये हो गया apply. Like आपका कोई ना कोई state या province name होगा, so try to put it there. Now you can set save. Save means कि ये जो आपका step है, this is now saved, and now you can move on. Or you can also set or like click on this and it does the same thing. Now again, some more personal information. What's your nationality? I'm just gonna go again with Azerbaijan. Again, that's not my real nationality, but just going with the example. But आपकी जो nationality है, just pick that from the drop down list here. Now the next question is, do you hold or have you held any other nationality other than indicated above? Like let's say Azerbaijan के अलावा अगर मेरे पास कोई और nationality होती, तो I can just say yes. And then यहाँ पे मैं वो दूसरी nationality, because dual citizens भी होते हैं. तो अगर आपकी नहीं है, you can just say no for now. And then, are you a permanent resident of a country region other than your country region of origin, which was indicated above? So basically, there are sometimes like dual citizens होते हैं, और कभी-कभी आप एक country के citizens होते हो, पर आपके पास PR होती है, permanent residence of another country. So ये यहाँ पे आपसे वो पूछ रहे हैं. In this case, I'm just gonna go with no. But let's say अगर आपके पास PR है किसी और country की, so you can then select that country name. But in here, I'm just gonna say no for now. National identification number, I'm just gonna click on does not apply. But अगर आपकी country में national identification number आपकी government आपको assign करती है, so you can add that in there. But let's just go with do not apply for now. US social security 99.99%, like I said, this is going to be does not apply. Because US आके आपको जब आप job करते हो, tax purposes के लिए आपको US social security number assign होता है. So just add that as a no. And for US taxpayer ID number, you can also add as like does not apply. Now let's go to travel next. अब हम हैं travel page पे. This is where now you need to indicate okay, आपका जो purpose है US travel करने का, like what's your purpose? So being this as a B1 B2 intention, because that's our intention, right? हम इसको fill कर रहे हैं for B1 B2. So you gotta pick B from here, which is temp, business, pleasure, and like visitor. और फिर इसकी जो sub category है, you gotta pick B2. And then the next question is, have you made specific travel plans? What this is asking is कि like आपने specific plans बनाए हैं, यानी like do you know the dates? क्या आपने इस date को जाना है और इस date को वापस आना है? For now, I'm just gonna go with, hey, I have no idea. क्या पता मुझे, you know, like I don't want to purchase plane tickets. क्या पता मुझे like visa officer visa ना दे, like what's gonna happen in that case? I'm just gonna say no. And then फिर आपसे जो estimated time है या estimated date है, वो आपसे पूछेंगे. For example, it's like August right now, so I'm just gonna put in September and then 2023. Again, this doesn't have to be, this is just an estimation. आप एक estimate provide कर सकते हो. And what's your intended length of stay? I'm just gonna say 1 month. And then who's paying? Oh, and before that, it's going to ask you कि आप कहाँ पे रहोगे. So I'm just gonna say test. What's gonna be your city? Just gonna say NYC. कौन से state में आप रहोगे? I'm just gonna go with Ohio. And what's your zip code? So zip code, I mean, you can just say 43809. I hope that's a valid zip code. But जहाँ पे आप यहाँ पे आपने वो एड्रेस लिखना है जहाँ पे आपने स्टे करना है, ठीक है, जिसके पास आप रहोगे, फॉर एग्जांपल. या फिर this can be a hotel as well, जिस होटल में आप स्टे करोगे, just look up their address, और US में आपको easily zip codes मिल जाएंगे. But just put that in there. And then who's paying for your trip? आप खुद पे कर रहे हो, तो just say self.
अगर कोई और person pay कर रहा है, like let's say somebody else, like let's say you have a kid in the US, वो आपके लिए पे कर रहा है, so then you can say other person और फिर आप उसकी details दे सकते हो यहाँ पे. But for now I'm just gonna say मैं खुद अपने इस trip के जो sponsor है वो मैं खुद हूँ. So I'm just gonna put in self and then move on to the next step, which is travel companions. Travel companions is that कि आपके साथ इस US के trip पे कौन कौन जा रहा है, like कोई family members साथ जा रहे हैं or what not. So वो आपने यहाँ पे fill out करना है. So are there any other persons traveling with you? If you put in no, आपसे कोई questions नहीं पूछते, but if you say yes, because हो सकते हैं, you know, आप like family के साथ भी जा सकते हो, maybe you know, maybe there are more folks with you, you can just say yes. If so, अगर आपके साथ कोई जा रहा है, so let's just go with that scenario. The next question जो आपसे पूछते हैं, are you traveling as part of a group or organization? I'll just put in no, but then they still ask you कि कौन आपके साथ जा रहा है, you know, तो आप जो आपके साथ जो आपका companion है वो उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है. But mind you, हर एक पर्सन का सेपरेट DS-160 फॉर्म होगा. आप एक DS-160 फॉर्म मल्टीपल बंदों के लिए आप नहीं यूज कर सकते. हर एक बंदे का अपना DS-160 फॉर्म होगा. बस for now I'm just gonna say test and then who's that, like जो आपके साथ जा रहा है, like you know, उसका और आपका क्या रिलेशनशिप है. So I'm just gonna say like, you know, parent and just move on to the next step. All right, previous US travel. पहले आप US गए हो या नहीं, or maybe like is this your first time? Let's go ahead and answer that. First question is, have you ever been in the US? अगर आप first time जा रहे हो तो आप no कर दो. अगर आप इससे पहले गए हो तो now you need to provide like oh मैं previously मैं इन dates को US में रहा था, or let's say I stayed for 2 months, I stayed for 6 months, 2 weeks. It's totally up to you, और आप यहाँ पे वो details दे सकते हो. और आप कब आए थे, फॉर एग्जाम्पल, तो आपने वो स्पेसिफिक डेट भी प्रोवाइड करनी है. बट आई एम जस्ट गोना से नाउ दिस इज माय फर्स्ट विजिट. हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीजा? काफी लोग होते हैं कि उनके पास ऑलरेडी यूएस वीजा होता है और वो फिर जस्ट रिन्यू करवा रहे होते हैं. बट अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है तो यू जस्ट हैव टू से यस. हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ यूएस वीजा और बीन रिफ्यूज्ड एडमिशन? I'm just going to say no here. So the next question is, have you ever been refused a US visa or been refused admission to the United States or withdrawn your application for admission at the port of entry? अगर आप पहले भी, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि B1 B2 वीजा में बहुत सारे you know rejections are very common, तो अगर आपने पहले अप्लाई किया था और आपको रिफ्यूज किया था यूएस कॉन्सुलेट ने या फिर यूएस एम्बेसी ने, तो नाउ यू नीड टू आंसर यस. बट अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है फॉर एग्जांपल, so you just gotta say no. Like, this is my first time, इससे पहले मैंने apply नहीं किया, so there's no rejection, there's no refusal. But for example, अगर आपको refusal पहले है और आप ये second time, third time apply कर रहे हो, तो you just gotta put in yes. और फिर आपको यहाँ पे explain करना है कि like what was the reason कि वो जो like what was the reason कि वो जो इससे prior जो मेरी visa application थी वो रिजेक्ट हुई थी. माइंड यू यहाँ पे आपने ट्रूथफुल रहना है अगर आपकी प्रीवियस रिजेक्शंस हैं, because the US embassies, they probably track all of the details from your previous application. So आपने यहाँ पे जो भी रीजन था प्रीवियस रिजेक्शन का या रिफ्यूजल का, वो आपने साफ साफ बताना है. Let's just go with the assumption that this is my first US visa application and I haven't been refused yet. Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services? क्या आपके लिए किसी ने like let's say green card application file की है, like marriage based या for example employer based? अगर किया है तो you gotta provide with yes. If not, you're just gonna say no. Let's just go with that example. I'm just gonna say address and phone. All right. Now यहाँ पे आपने अपना home address, अपना mailing address और email address and other like social media presence है वो provide करनी है इस page पे. So let's go do that. In my street address, I'm just gonna put in test address. Let's go with test city, test province. Again, you have to provide these अपने point of view से या अपने perspective से. आपका जो भी address है, just put it in there. For now, I'm just adding test values, postal zip code. Just gonna say
67898, and let's just go with the same example, Azerbaijan. Okay, is this, ये जो आपने अभी एड्रेस यहाँ पे पुट किया है, is this your mailing address as well? So we can just say yes कि मेरा mailing address, अगर US embassy से मुझे कोई फॉर एग्जांपल मेल आ रही है, तो वो मुझे इसी एड्रेस पे आप भेज दें. फॉर द मोस्ट पार्ट ये लाइक 99.99% सेम ही होंगे. रेयरली ऐसे होता है कि आपका मेलिंग एड्रेस और आपका होम एड्रेस डिफरेंट हो. नाउ व्हाट्स योर फोन नंबर? जस्ट गोना पुट इन, दैट्स टेस्ट फोन नंबर. आपका जो फोन नंबर है वो आप प्रोवाइड करो. अगर आपके पास मल्टीपल फोन नंबर्स हैं, do that. In this case, I'm just gonna say I do not have. I just have one primary phone number. मेरे पास secondary और work phone number कोई नहीं है. Have you used any other phone numbers in the last 5 years? अगर आपके पास multiple numbers थे last 5 years में, तो आप वो भी provide कर सकते हो यहाँ पे. For now, I'm just gonna say no. Now, what's your email address? I'm just gonna say test@gmail.com. पर please यहाँ पे आपने वो email address put करनी है जो कि आप daily use करते हो. Let's move on to the next question. Have you used any other email addresses in the last 5 years? अगर आपने और email addresses use की हैं तो you gotta provide that. जब आप yes click करते हो तो आप more than one email address आप जो है provide कर सकते हो. I've never personally done that, but I'm hoping कि आप यहाँ पे multiple email IDs provide कर सकते हो और फिर आपको multiple email IDs पे जो भी emails हैं वो आपको receive होंगी. But for now, let's just go with the assumption that I only have this one email address, test@gmail.com, and I don't have any other email address. All right, the next one is social media presence. फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक पे है, फॉर एग्जाम्पल आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी ऐसा है, तो आप यहाँ पे वो प्रोवाइड कर सकते हो. अगर आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो तो इतने सारे ऑप्शंस आपसे पूछते हैं. अगर आपका लिंक्डइन है, अगर आपका गूगल प्लस है, फ्लिकर, पिंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल, सो आप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो और आप मल्टीपल प्रोवाइड कर सकते हो. अगर मैं ऐड अनदर पे क्लिक करूँ तो सेम एक और यहाँ पे आ जाता है और आप यहाँ से फिर अगेन लाइक लेट्स से आई एम जस्ट गोना से Facebook. So Pinterest, I'm just gonna say test. Facebook, I'm just gonna say test. But आपने जो है वो अपने जो यूजर नेम्स हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के, वो आपने यहाँ पे राइट डाउन करने हैं. Now the last question on this page, do you wish to provide information about your presence on any other website that you have used within the last 5 years to create or share content? I'm just gonna go with no for now. कि ये जो मैंने आपको प्रोवाइड की है Pinterest and Facebook, that's enough. Let's go to the next one, which is passport. Now यहाँ पे आपने अपनी कंट्री का जो है वो जो आपको पासपोर्ट है वो आपने उसकी डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी है. So I'm just gonna say okay, so यहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल जो है पासपोर्ट टाइप्स हैं. अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है आप वो प्रोवाइड कर सकते हो. अगर आपके पास ऑफिशियल है then do that. I'm just gonna go with regular. Just gonna say जो मेरा पासपोर्ट नंबर है, I hope that's just a test value, but that's what I put in. पासपोर्ट बुक नंबर भी होता है. आप अपने पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज होता है उस पे आप देखोगे तो पासपोर्ट बुक नंबर आपको इजीली मिल जाएगा. but I'm just gonna say it does not apply for now. और ये जो पासपोर्ट है this is from Azerbaijan. Which city, कौन सी सिटी में आपको ये पासपोर्ट इशू हुआ था? So I'm just gonna say Baku, but आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा कि इस सिटी में आपको ये पासपोर्ट इशू हुआ था. Now next one is the state or the province. I'm just gonna say test, and country is Azerbaijan. Now the next is issue date. So this was आपका पासपोर्ट इस डेट को इशू हुआ था और इस डेट को एक्सपायर हो रहा है. That's what we need to add in. I was gonna say 6 Feb 2023 और किस डेट को एक्सपायर हो रहा है वो. So I'm just gonna say 3 Jan 2030. अगर आपके पासपोर्ट पे कोई एक्सपायरी नहीं है, so you need to check this box. Have you ever lost a passport or had one stolen? क्या आपका कभी भी आपका पासपोर्ट जो है वो गुम हुआ है या फिर आपसे किसी ने चोरी किया है या नहीं? So I'm just gonna say no and then move on to the next question. All right, US point of contact. जहाँ पे आप let's say
यूएस जा रहे हो आप, अगर आप किसी के पास रहोगे या फिर आपके कोई जानने वाले हैं यूएस में, तो आप जो है वो उनके नाम प्रोवाइड करो। यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो यू कैन जस्ट से डू नॉट नो इन, पर लाइक लेट्स जस्ट से अगर अगर मेरा कोई जानने वाला है इसमें, because so I'm just gonna say, oh, just say do not know. Like let's say you do have a US contact, you can just put their first name and their last name here. The surname is the family name. Now ये जो बंदा है, for example, like आपका और इसका क्या relationship है? So I'm just gonna say that's my friend, and I'm gonna go next to the family section. All right, so now the next page is family. So यहाँ पे आपने अपने parents के और अपने siblings के सारी information provide करनी है, but like if like if you just provide details about your father and your mother, then that should be okay. So like father's full name and their date of birth. Again, I'm just gonna go with the same thing, test, and then test. Now more often than not, अगर आपको उनके date of birth का नहीं पता, so you can just say do not know. But let's say if you do know their date of birth, then you can just like select the date from here. यहाँ से आपने date select करनी है, select a month, and then an year here. I'm just gonna put in 1955, for example. Just say father as a test. Is your father in the US? अगर आपके father US में है, then you gotta select yes. अगर नहीं है तो let's just say no for now. And then आपकी जो mother हैं, what's their first name and last name? Like for example, I'm just gonna go with the assumption that I do not know their date of birth. And is your mother in the US? Let's go with no. Do you have any immediate relatives, not including parents in the United States? अगर आपके कोई भी immediate relatives हैं, for example, fiance, husband, wife, या अगर आपके बच्चे son या फिर daughter, या फिर आपके brother और sister जो हैं वो अगर US में हैं, तो now you gotta answer it here. If I select yes, then it's going to show me एक और section जहाँ पे आपने फिर लोगों के नाम लिखने हैं, और यहाँ पे आपने ये भी साथ बताना है कि oh this is my sibling, I have a like let's say आपका जो spouse या fiance है that's in the US, but for now I'm just going to say no, मेरे कोई US में relatives नहीं है. Now let's go towards work, training or education. Oh, do you have any other, has not been answered. Oh, we missed that. Okay, let's just say कोई relatives नहीं है, so let's go with that. No. Now this is concerning your current employment or education. Currently जब आप ये form fill out कर रहे हो, तो like what's your primary occupation? आप काम करते हो, आप student हो, what's up with that? For example, I'm just gonna say, oh, I'm a student. What is your school name? So I'm just gonna say test school. Again, add these as details. Again, ये सारे details आपने अपने हिसाब से fill out करनी है. जो भी आपके school का address है, just put in there. I'm just gonna say test province. I do not know the zip code of my school. Then you can just provide a phone number. And then country stays as Azerbaijan, or just like pick your home country. What was your start date? So let's say I started this in first Jan. Let's just say I started in 2019. What's your monthly income? let's say अगर आप यहाँ पे ये select करते हो कि आप let's say government employee हो, तो उस case में आपकी salary होगी, right? So in that case you can then put in your monthly income in your local currency. But like let's say with this example में, because हमने select किया a student, so in that case I do not have any income, right? So I'm just gonna say does not apply. यहाँ पे फिर आपने इस वाले फॉर्म में जो कि आपसे पूछ रहा है कि briefly describe your duties, आप क्या क्या like let's say अगर आप pre medical पढ़ रहे हो कॉलेज में, या फिर आप pre engineering पढ़ रहे हो, या अगर आप computer science पढ़ रहे हो for example, तो आप यहाँ पे like वो details आप जो है provide कर सकते हो. But this is totally up to you कि आप जो है वो कौन सी details जो आप यहाँ पे provide करें. I'm just gonna say test details for now, and then go to the next section, which is work and education. Were you previously employed? So for example,
as a student अगर आपने कहीं पे paid internship की थी, so you can say yes. And I'm pretty sure this is then going to ask you कि आप हमें अपने employer name के बारे में बताओ. अगर आप let's say government employee थे, अगर आप private employee भी थे, तो you can also say yes. अगर ये आपकी first job है, for example, you can just say no and then move on to the next question. In this case, I'm just gonna go with okay, oh, I'm still in school. इससे पहले मेरी कोई job नहीं थी. I'm just gonna say no. Have you attended any education institutions uh, at um, uh, at at a secondary level or above? um, Basically आपने जो secondary level से above की जो है वो education ली है या नहीं. I'm just gonna say no for now, but if you have like अपनी country के हिसाब से जो आपका secondary level बनता है, please calculate that और यहाँ पे आप वो जो details है वो आप provide कर सकते हो. Let's just go with no for now. And then the next one is your additional questions about work, education and training. आपसे कुछ और questions पूछ रहे हैं यहाँ पे. Do you belong to a clan or a tribe? क्या आप किसी tribe से या clan से belong करते हो? Like family, usually लोगों के family backgrounds है वो किसी tribe या clan से associated होते हैं. So that's what you need to answer here. If I say yes, then it's going to ask me for the clan or the tribe name. It's going to say no. Provide a list of languages that you speak. अगर आप let's say एक से ज़्यादा language सीख बोल सकते हो. For example, अगर आप उर्दू या फिर हिंदी या फिर आप English बोल सकते हो यहाँ पे, तो you need to provide that. I'm just going to say I speak English and then I speak Urdu as well. That's it. Just say I speak Punjabi as well. या फिर Azerbaijani. Have you traveled to any countries, regions within the last 5 years? Within the last 5 years, आप किसी दूसरे country में गए हो या नहीं? Apart from your home country. If you have, select yes. और फिर आपसे ये countries drop down appear होगा और यहाँ पे आपसे again पूछेंगे. In this case, let's just go with the assumption that last 5 years में मैं अपनी home country से कभी बाहर नहीं गया. Have you belonged to or contributed to or work for any professional, social or charitable organization? Like let's say अगर आप किसी प्रोफेशनल सोशल या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या फिर NGO से फॉर एग्जांपल अगर आप जब बिलोंग करते हो या आपने काम किया है उनके साथ, तो आप यहाँ पे प्रोवाइड करो. आई यूजुअली गो विद द आंसर दैट नो, but this can be different in your case. Do you have specialized skills or training such as firearms, explosives, blah blah? अगर आपने let's say firearms के साथ या explosive के साथ काम किया है, तो you need to provide that. In this case, no. Have you ever served in the military? अगर आपने अपनी country के army में serve किया है, so that's what you need to provide and say yes. If not, then you can just say no. Let's just say कि आपने जो है वो provide आपने अपनी जो country के military में आपने serve किया था, so now you need to say oh which branch of service, आपका rank क्या था, जो आपकी speciality थी वो क्या थी. But like I said, in this case, let's go with the assumption as no. Have you ever served in, been a member of, or been involved with a paramilitary unit, vigilante unit, rebel group, guerrilla group, or an insurgent organization? No. Means के इन सारे ये जो explain किए यहाँ पे paramilitary units, vigilante unit, आपने कभी इनके साथ serve किया था या फिर आप इन groups के कहीं पे member रहे थे? Let's just go with the assumption that no. Next up, security background. कोई तो the first question यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कोई ऐसी डिजीज है जो कि जो कि बाकी लोगों को आप like let's say affect कर सकते हो. For example, like let's say gonorrhea for example, या फिर active TB अगर आपका है, tuberculosis. अगर आपके केस में that true है, तो you need to answer yes. If not, let's go with no. For the most part, यहाँ से सारे questions जो हैं वो 90%, 99% of the times आप no ही answer करोगे. But it may apply to you. Please be truthful in questions में. आपने झूठ नहीं बोलना. Do you have a mental or a physical disorder that poses or is likely to pose a threat to the safety and the welfare of yourself? कोई mental या फिर physical disorders हैं आपको जिससे आपको खतरा है या फिर दूसरों को? Let's just go with no. Are you or have you ever been a drug abuser or addict?
कभी आपने जो है फॉर एग्जांपल नशे किए हैं या नहीं, या फिर आप ड्रग यूजर हो या नहीं. Just go with the assumption as no. Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime, even through subject of pardon? कभी आप arrest हुए थे या नहीं? It's really simple. Now, have you ever violated or engaged in a conspiracy to violate any law, related to controlled substance? Like drugs के case में क्या आपने कोई law जो है violate किया है या नहीं? I'm just gonna go with no. Are you coming to the United States to engage in prostitution or unlawful commercialized vice? Let's just go with no. Basically आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे आके law break करने के plan तो नहीं कर रहे, which is a really bad idea, mind you. Please do not do that. Have you ever been involved in or do you seek to engage in money laundering? क्या आप यहाँ पे आके money laundering के plans हैं आपके? No. Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking offense? क्या आप कभी human trafficking में involved रहे हो? नहीं. क्या आपने no. Second last question. क्या आपने किसी की help की है जो कि human trafficking में involved था? No. क्या आप किसी ऐसे पर्सन के स्पाउस मींस कि आपका हस्बैंड या वाइफ या फिर आप सन या डॉटर हो किसी ऐसे इंडिविजुअल के जो कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लास्ट 5 years में इन्वॉल्व रहा हो? बिकॉज माइंड यू लाइक ऐसे लोग होते हैं जो कि लाइक कन्विक्टेड होते हैं, सो इफ दैट्स द केस यू नीड टू ऐड देयर नेम्स. अगर आपका ऐसा कोई स्पाउस, सन, डॉटर या फिर रिलेटिव था, I mean not relative but spouse, son or daughter, then you need to add their names. Let's just go with the assumption as no. The next one, क्या यूएस में आप क्या यूएस में आके आप एस्पेनाज, sabotage और किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में आप जो है वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हो या नहीं? लेट्स जस्ट गो विद नो. कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज आप प्लान कर रहे हो? नो. आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को? नो. आप खुद मेंबर हो, एक्टिव मेंबर हो ऐसे ग्रुप के? नो. क्या आपका कोई स्पाउस, सन या फिर डॉटर या फिर ऐसा इंडिविजुअल जो आपसे रिलेटेड है ऐसी एक्टिविटीज में या फिर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व है इन द लास्ट 5 years? If that's the case, you need to answer yes. In this case, no. Have you ever ordered, incited, committed, or assisted, or otherwise participate in genocide? क्या आप कभी genocide में involved रहे हो? No. So yeah, like all of these questions, for the most part, अगर आपने कभी law नहीं break किया हुआ, so you can just say no to all of these. But please go through all of these questions. And then the part 4.1, कभी आपने यूएस में illegally जो है वो enter होना चाहा है या नहीं? by unlawful means. I'm just gonna say no. क्या आप कभी यूएस से deported हुए हो या नहीं? Let's just go with no. All right, now part 5. क्या आपने ऐसे यूएस citizen को अपनी custody में रखा था? Like let's say उसके पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ? So I'm just gonna say no. Have you ever voted in the United States? क्या आपने कभी वोट किया था? Let's just go with no. अगर आपने कभी किया है, I don't think it's a good idea. अगर आप नॉन इमिग्रेंट वीजा पे हो और आप यहाँ पे आके वोट कर रहे हो, so let's just go with no. Have you ever renounced US citizenship? Since आप नॉन इमिग्रेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो now you need to answer no. और next up, which is our final step, यहाँ पे आपने अपनी फोटो अपलोड करनी है. And yeah, this was it. ये था हमारा DS-160 फॉर्म जो है वो फिल आउट करना. Now the next step, जैसे आप यहाँ पे अपनी फोटोज अपलोड करोगे और ये आप सबमिट करोगे, प्लीज अगेन यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ दिस एप्लीकेशन आईडी, और फिर यही एप्लीकेशन आईडी फिर आप नेक्स्ट स्टेप जो है स्केड्यूलर में जो एक अदर वेबसाइट पे होता है, वहाँ पे आप ये एप्लीकेशन आईडी यूज करोगे. बट दिस एक्चुअली कम्स टू like this is really the end. अगर आप यहाँ पे स्टेप्स देखो तो इसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन जो हैं, ये सारे आंसर जो ये रिव्यू करने को मिलेंगे, और उसके बाद आपने जस्ट साइन करना है यहाँ पे. आई डू नॉट हैव ए फोटो टू अपलोड राइट नाउ, बट जब आप अपने फोटो स्कैन कर लो और यहाँ पे आके जब आप उसको अपलोड करोगे, दैट्स इट. when you click say next confirm, and once you review that form and sign it, that's gonna be it. Alright, this was it. Simple form था, बहुत सारी details हैं. Just be truthful about जो भी आप यहाँ पे information दो. And
झूठ बोलना यहाँ पे एंड लाइक डिसीव करना इज नेवर अ गुड आइडिया. Alright, this was it. Please, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, please do that and I'll see you in the next video.